Okay, so good evening everyone. How are you all? Good evening, good evening, good evening. Okay. Okay, so can someone recall me what I studied in the last class? Yes. क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? हेलो, am I audible? Yes, sir. Okay. तो Continuity बताओ and क्या पढ़ा था हमने लास्ट? Yes, correct. Differentiation Second हमने पढ़ा order था. derivative. Okay. Yes, sir. So second order. Okay, fine. ओके, सो बेसिकली हमने हमारा जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. ओके, जो भी डेरिवेटिव हमने पढ़ा उसको कैसे अप्लाई करना है इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट और एनी अदर फंक्शंस, उसको हम देखने वाले हैं. ओके, एक बार बता दो कि आई एम ऑडिबल क्लियरली एंड विजुअल क्लियरली. इज द स्क्रीन Yes, sir. विजिबल? ओके, गुड टू गो. फाइन. ओके, सो स्टार्ट. इन द लास्ट क्लास हमने ये वाला चैप्टर था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसको हम खत्म कर लिया था. नाउ स्टार्ट विथ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. सो ये हमारा सारा सिलेबस है. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, देन हमारा आएगा लाइक मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन सम सिंपल प्रॉब्लम्स. ओके, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको इजीली हम खत्म कर लेंगे. ओके. ओके, कमिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. ओके, ये वाला चीज मैंने लास्ट क्लास में बताया था. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब क्या होता है? हमारे पास तो होता है, लाइक लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ पर जो y मेरा होता है कौन सा फंक्शन होता है? डिपेंडेबल और इज y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? dependent. Dependent. यस, डिपेंडेंट वेरिएबल. यस, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट क्वांटिटी. ओके, एंड x इज माय इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. ओके, सो ये बेसिक चीज हमें पता है. ठीक है, अब बच्चों ये जो हमारा क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी दीज आर ऑफ फ्यू काइंड्स. ओके, सो क्वांटिटी जो होता है, so this may be physical quantity also. Okay, basically physical quantity. Physical quantity such as, can anyone give me an example of physical quantity? एक एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी का. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल दो. Distance, बताओ. path, यस, डिस्टेंस, पाथ और डिस्टेंस. ओके, ग्रेट. देन वॉल्यूम हो सकता है, एरिया भी हो mass, सकता है, और ये सभी हमारा स्पीड, वेलोसिटी. यस, पाथ, पाथ, पाथ और डिस्टेंस सेम होता है, और mass, वेलोसिटी, स्पीड एक्सेट्रा. मास, यस, मास आल्सो. यस, मास, करेक्ट, मास. ओके, सो ये चीज हमारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है. ठीक है ना? ओके, सो ये फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज करती है विथ रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ और एनी अदर क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंडिंग अपॉन देम. ठीक है, मेरा जो क्वांटिटी है, लेट्स सपोज एनी क्वांटिटी, लेट्स सपोज वेलोसिटी, ये कैसे चेंज करता है वेलोसिटी के साथ, और ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो कि वेलोसिटी को अफेक्ट करती हैं, उनके साथ वो कैसे वैरी करता है, उसको देखेंगे हम इस चैप्टर में. दैट इज रेट ऑफ चेंज. बताया था जब हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? बताओ. रेट ऑफ चेंज, इसको हम क्या बोलते हैं?
बताओ, डेरिवेटिव बोला था मैंने, डेरिवेटिव। Derivative. यस, डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज। ओके, मैंने एग्जांपल भी दिया था वेलोसिटी का, कैसे कि v एक्सीलरेशन का, a इज इक्वल टू dv बाई dt, कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम टू प्रोड्यूस अस एक्सीलरेशन, है ना। तो ऐसे एग्जांपल्स मैंने दिए थे। ओके फाइन, तो चलिए देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स रिमेंबर। बेसिकली लेट्स सपोज अगर मेरे पास ओके, उसको जाने से पहले लेट्स सपोज आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, इसको कर लो क्वेश्चन। ओके, लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसका निकालो डेरिवेटिव कितना आएगा, कितना है डेरिवेटिव, 6x minus 4. dy सिक्स बाई माइनस dx फोर। कितना आएगा, 6x माइनस 4। ओके गुड। ओके, तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, area of the circle with respect to its radius r at r is equals to 5 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालेंगे इसको, इट आस्क मी दैट अगर मेरे पास एक सिंपल का सर्कल है, लेट्स सपोज सर्कल, ओके, इसका रेडियस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एट सम टाइम इट विल बी लाइक दिस, अनदर टाइम इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को पूछा है कि इसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा एट द टाइम आर इज इक्वल टू 5, जब मेरा आर 5 सेंटीमीटर होगा, तो उस टाइम पर मेरा ये जो एरिया कितना होगा, ठीक है। बेसिक सा प्रॉब्लम है, आई टेल यू हाउ टू डू। ओके, लेट्स, गिवन क्या है, गिवन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, सर्कल का एरिया फाइव आवर्स। कितना होता है, ओके, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज बेसिकली फंक्शन, दिस इज माय एफ ऑफ आर, ये मेरा फंक्शन है ना। क्योंकि सर्कल का दिया हुआ है, तो सर्कल का जो भी इक्वेशन है, एरिया का जो फॉर्मूला हो गया, वो मेरा फंक्शन हो गया। तो बोले क्या, एरिया कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, दैट मीन्स एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू, okay, area changing with respect to radius. So I have to find the rate of change of area, that means d by dr of pi r square. Am I correct? सबको समझ में आया? यस सर। Yes, Yes, sir. यस। pi r square कितना आएगा, 2 pi कितना r. आएगा, 2 पायर। 2 pi r। ओके, ओके गुड। तो ये हमारा आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब पूछा क्या गया है ना, 8 पॉइंट r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, dr by, sorry, d by dr of pi r square, that is 2 pi r is equals to 2 into pi into r is equals to 5, so कितना आएगा ना, 10 pi। ओके क्लियर, ओके, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट क्या होगा, अगर ये एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, गुड। बट यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ओके, दैट मीन्स यू कैन सी हियर, Meter. ये वाला जो हिस्सा लाइक एबव हिस्सा है, मीटर आएगा, यस, मीटर, सेंटीमीटर आएगा ना। ये देखो, ये हमारा क्या है ऊपर, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे आर का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारा आएगा सेंटीमीटर। क्लियर, although we are finding the rate of change of area, still we are getting in centimeters। Okay, fine, good। Okay, so now let us move to next one। Okay, so यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। ओके, लेट्स सपोज
मेरे पास है, अगर रेट ऑफ चेंज, अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आया, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आया तो क्या होगा, और अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आए तो क्या होगा। ओके, सो इसको समझते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। लेट सपोज मेरे पास एक लाइन है, ओके, एक लाइन है 1 सेंटीमीटर का। ओके, सो ये क्या बोल रहा है कि मेरा जो लाइन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज चेंजिंग। ओके, सो आइदर इट में इंक्रीज द लेंथ, it may increase the length like this, or it may decrease the length also. आइदर लाइन इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। ओके ना, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एनी वेरिएबल अगर मेरा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा ना, मेरा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। यस, सो इन दैट केस आई टेल द रेट ऑफ चेंज इज पॉजिटिव। बट अगर मेरा क्वांटिटी जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एनी क्वांटिटी, दैट मीन्स द फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू विल बी नेगेटिव। सो एट दैट टाइम आई से द रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव। ओके, क्लियर हो गया। अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो रेट ऑफ चेंज इज पॉजिटिव, अगर घट रहा है तो रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव। क्लियर? Yes, sir. Okay, good. So on the basis of that we'll do some questions. Okay, so let us suppose I have a question. The question is, the length x of a rectangle, length x of a rectangle is decreasing decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter 2 centimeter per minute. Okay, then find rate of change of rate of change of first is the perimeter, and second is the area at x is equals to 10 centimeter and y is equals to 6 centimeter. Okay, so this is my question. That means I have a rectangle and the length and breadth both are changing with respect to time. ठीक है, अगर मेरा जो लेंथ है, द लेंथ x, इट इज चेंजिंग with the rate of 3 centimeter per minute and it is decreasing also. Okay, डिक्रीज हो रहा है कितना, 3 centimeter per minute में, और मेरा जो है ये वाला width वो इंक्रीज हो रहा है विथ 2 centimeter per minute पे। तो आई हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर and the rate of change of area with the given y and x values। हो जाएगा ये वाला, कैन यू डू इट, ट्राई इट, एक ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो हम करेंगे, ठीक है, ट्राई करो। सेम सिंपल रूल्स, रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी एक्स और डी बाई डी जो भी दिया होगा इधर। ओके, ट्राई करो, पहले लिखो कि गिवन क्या है, उसके बाद ट्राई करो कि क्या पूछा गया है। यस, पेरीमीटर मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर।
Okay, -2 and +2 centimeter. Okay, we'll see. Others? बताओ. Swastik, Rahul, Abhipsa, Monisha, Riyanka. बताओ. Okay, we'll do simultaneously. पहला जो चीज है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर. ओके, लेकिन हमें पहले दिखाना है कि गिवन क्या है. गिवन क्या है ना, डी एक्स बाई डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द लेंथ एक्स. कितना है यहाँ पर, कितना है? -3 3 डी एक्स बाई डी centimeter. टी कितना है? -3 centimeter per minute. क्यों? बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग. डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या, माइनस आएगा यहाँ पर, बताया मैंने. द रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव व्हेन इट इज डिक्रीजिंग. Okay, this is for decreasing. Sorry, this is for increasing. Sorry, increasing, and this is for decreasing. Okay, so it will become -3 centimeter. Okay. Similarly, dy by dt कितना है? dy by dt 2 centimeter बताओ. per minute. Last percent. 2. Yes, 2 centimeter per minute. Okay. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर P is equals to 2 into x plus 1. 2 yes into Rahul. x plus b. Yes, 2 into 2 into x 2 plus 1. whole into x plus y. Yes, 2 whole into x plus y. Okay. So now अब बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर दैट मींस dp बाई dt कितना आएगा, कितना आएगा अभी बताओ. dp बाई dt कितना आएगा? -2. -2. Why? Why -2? Yes, because it will be 2x plus 2y. Okay, मतलब d by dx of 2x plus 2y dt of. Okay, that means 2 into dx by dt plus 2 into dy by dt is equals to कितना आएगा? 2 into dx by dt कितना है? -3. 2 into -3 plus 2 into 2, that is equals to -6 plus 4, that is -2 centimeter per minute. Clear everyone? Everyone clear? Yes, sir. Okay. So this is centimeter per minute. Okay. So similarly, if I give you another question, ये वाला आप ट्राई करिए और मेरे को बताइए. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. Okay. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from it, away from the wall. Okay, away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. Okay, then how fast is the height on the wall decreases when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall.
ओके, तो बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ। सो एक लैडर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर लॉन्ग का, ठीक है। इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार है मेरे पास, लेट्स सपोज दीवार वॉल है, और दिस इज माई ग्राउंड। ओके, जो मेरा लैडर है वो कितना है, दैट इज 5 मीटर का है। ओके, सो इट इज 5 मीटर long ladder. Okay, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. मतलब कि ये जो लैडर है इसको मैं खींच रहा हूँ अवे फ्रॉम द वॉल। ओके, आई एम खींच ड्रैगिंग इट। तो सो व्हाट इज द रेट, रेट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कितनी देर में हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, मतलब ये जो कितनी जल्दी डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो बेसिकली इट इज मी द डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिक्रीज of this length. Okay, when the foot of the ladder is 4 centimeter away from the wall. Okay, so कैसे करेंगे इसको, how can I do it? सबको क्वेश्चन समझ में आया? You didn't got the question? Okay, 8 by 3 meter per second. Okay, fine, we'll see. Others? बाकी बताओ। centimeter per second. Okay, we'll see. We'll see. No issues. Mm-hmm. Yes. Others बताओ। टाइम करो। ओके, टेक सम टाइम, ट्राई टू डू इट। अगर नहीं हो रहा है तो हम करेंगे, ठीक है। यस। Okay, 8 by 3 centimeter per second. Okay, good. Okay, let's start. Okay, let's suppose ये जो हमारा distance है, let's suppose this is my x. I'll name it as a, b, c, and let's suppose this is my distance x. Okay, तो given क्या है? Given AC is equals to 5 meters, BC is equals to x, and AB कितना है? Let's suppose y. Let's suppose y. Okay, let's suppose my y. ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, डी वाई बाई डी टी। बेसिकली ये कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है वही पूछा है ना, कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डी वाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो वी नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी टी, पर हाउ कैन आई फाइंड वाई हियर, व्हाट इज माय वाई? 25 minus x square from the book. 25 minus x square. यस, करेक्ट। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम कितना आएगा ना, 5 square is equals to x square plus y square, दैट इम्प्लाइज y कितना आएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, आई हैव टू फाइंड dy by dt, दैट इम्प्लाइज dy by dt इज इक्वल्स टू कितना आएगा, बताओ। फर्स्ट इसका करेंगे तो कितना आएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स, कितना आएगा 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 इंटू रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू डी बाई डी टी ऑफ 25 minus x square, that is 0 minus x square 2x divided by 2 into 25 minus x square। फिर से अगर x है हमारे पास तो dx by dt, क्योंकि x इज अ वेरिएबल ऑफ t। ओके, सो यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज 2x by 2 into
25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंक्रीजिंग कितना है हमारे पास dx by dt फ्रॉम द क्वेश्चन कितना है हमारे पास 2 2 2 per second. बताओ yes 2 centimeter per 2 second centimeter per okay second. okay 1 minute this is not centimeter actually this is meter we'll write in meter because everything is in meter right so we'll make it in meter okay so that means into 2 okay as dx by dt is equals to 2 fine तो यहाँ पर हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा 2 कैंसिल दैट इज 2x बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर देन क्या करेंगे अभी Sir, minus 2 नाउ is दिस में dy by dx yes minus why 2 minus x 2x x is bracket. equal to 4. Minus 1, sir. Minus x 2x. oh yes यहाँ पर माइनस 2x था करेक्ट करेक्ट यहाँ पर माइनस 2x था करेक्ट ओके सो माइनस 2x अब क्या करेंगे नाउ व्हाट Put x is equal to 4. yes so it's given that x is equals to 4 सेंटीमीटर पर कितना होगा that means at x is equals to 4 कितना आएगा dy by dx is equals to minus 2 into 4 by 25 minus 16 का रूट ओवर so कितना आएगा minus 8 divided by this is 3 okay so minus 3 centimeter or so meter per second okay so this is what you have done clear everyone good to go yes okay good fine okay now we'll move to the next concept that is increasing and decreasing functions ओके जिससे कि नाम से पता चलता है कि कोई अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हमें देखना है फाइन ओके सो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं लेट्स सपोज आई हैव अ फंक्शन जिसमें एक्स एक्सिस जिसमें वाई एक्सिस ओके जस्ट स्ट्रेट एक्स एक्सिस लाइक दिस वाई एक्सिस लाइक दिस ओके सो मेरे पास एक फंक्शन है लाइक दिस आई कैन गोइंग अप ओके सो ऐसा एक फंक्शन मेरे पास है ठीक है so I'll take this point let's suppose the x1 this is my x2 this is my okay I'll make it little good मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी okay okay so this is my x3 this is my x4 okay and I'll increase like this okay this is my x-axis this is my y-axis this is my point x5 x5 and this is my x6 okay so can anyone tell me at which point the function is increasing कौन से इंटरवल पर मेरा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ओके सबको इंटरवल के बारे में पता है इंटरवल इफ यू नो व्हाट इज इंटरवल Yes, X2 sir. ओके तो बताओ कौन से इंटरवल पर मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है x2 to x3 and x4 to x5. यस बिकॉज आई कैन सी हियर ये जो मेरा इंटरवल है इस इंटरवल पर मेरा जो फंक्शन है वो ऊपर जा रहा है इट इज गोइंग अप सिमिलरली इन x4 एंड x5 इट इज गोइंग अप सो ये जो मेरे दो इंटरवल है x2 to x3 एंड x4 to x5 इस इंटरवल में मेरा ग्राफ जो है और मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है ओके सो ये तो होगा ग्राफिकली अगर मेरे पास एक कुछ लाइक रैंडमली गिवन है मेरे पास फिगर नहीं है तो हाउ कैन आई डू इट ओके सो फॉर दैट विल स्टडी अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस सो ये जो हमारे इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शन है दिस इज बेसिकली ओके दिस इज बेसिकली observed in the interval observed in intervals
ओके, दिस इज नॉट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं दिखा सकते। हम दिखा सकते हैं कि अगर वो इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, फाइन। सो अगर यहाँ पर मैं देखूं, ओके, सो एट द पॉइंट x1 मेरा एक वैल्यू आएगा f of x1, and similarly at some point x2 also it will come that f of x2, this point is f of x2. What is happening to f of x1 and f of x2? If I have x1 is less than x2, what is happening to the function Less than. f of x1 and f of x2? Less than it? Less than it? f of x1 is equal to f Does of it seem x2. less? हाँ, ये दोनों सेम है। ओके, बिकॉज दे आर इन द सेम लेवल। ओके, सो f of x1 का वैल्यू f of x2 के वैल्यू के साथ बराबर हो जाएगा। लेकिन लेकिन मेरे पास है x2 एंड x3 which is greater. Okay, that implies अब यहाँ पर x2 और f of x3 के बारे में हम क्या बता सकते हैं? This is value of f of x2, this is value of f of x3. Okay, what can I say is f of x3, this point. What can I say? Are they equal, greater or less? f of Obviously f x3 of greater x2 than is f less of than f of x. x3. Yes, correct. Okay, Yes, sir. so but I can overall say that this function is increasing. ये पूरा पूरा जो function है वो increase कर रहा है। Yes, so in that case I'll say a function is said to be increasing function if for every m and n, or m less than n, f of m is less than or equal to f of n. Okay, so this is the condition. अगर मेरे पास कोई भी दो वैल्यू है और उन दोनों वैल्यू पर अगर मेरा फंक्शन का वैल्यू इक्वल और ग्रेटर आ गया, तो इन दैट केस आई से दैट ये जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है कभी कभी इंक्रीज भी हो रहा है, कभी कभी सेम भी हो रहा है। सो इसको हम थोड़ा सा और चेंज करके भी बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन विल से ऑल्सो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, मतलब जो डिक्रीज नहीं हो रहा है, either it may be constant or increasing. Okay, so this word is what non decreasing function. Okay, that means अगर मेरे पास तो वैल्यू है, यहाँ पर एक वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू, अगर का फंक्शन वैल्यू सेम हो रहा है या फिर जो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से कम आ रहा है, that means that this is also increasing function. Okay, okay, अब देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब क्या है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। So the function will be strictly increasing like this. There is no values. Okay, यहाँ पर एक पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट x1 और यहाँ पर एक पॉइंट है x2। ओके, तो x1 पर वैल्यू कितना आएगा ना, f of x1, यहाँ पर कितना आएगा f of x2। assuming that x1 is less than x2, that implies यहाँ पर क्या हो रहा है कि f of x1 जो है दिस इज ऑल्सो f of लेस देन f of x2। मतलब कि अगर जो मेरा वैल्यू है वो हमेशा हमेशा लेस आएगा, there is no possibility of equal, then I can say that this is my strictly increasing function. Okay, if there is no sign of equal. clear? Strictly increasing और एक ही फर्क होता है, यहाँ पर एक इक्वल साइन होता है, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं होता। ओके, so this is the basic difference in between them.
Okay, good. So similarly, can anyone tell me for decreasing function? मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है. Okay, so this is my function. This is my x axis, this is my y axis. यहाँ पर क्या कंडीशन होगा? If x1 Anyone? less than x2, then f of x1 Mm-hmm. greater than f of x2. Okay, fine, good. Okay, अगर मेरे पास है f of, okay, I have x1 is less than x2 and f of x1 is greater than f of x2, then it is okay. But in this case, let's suppose this is my f of x1 or x1 and this is my x2. Okay, but both of them has same functional value, that is this one. Let's suppose a. Okay, so I can write that ये equal भी हो सकता है. F of x1 is less than or equal to, sorry, greater than or equal to. Okay, so दोनों साइड आएंगे यहाँ पर. Okay, so this is my condition. Okay, now moving to the strictly decreasing, that means ग्राफ ऐसा होगा कुछ like this. Okay, तो यहाँ पर क्या आएगा कंडीशन? What is the condition here? x1 less than x2, f of x1 greater than f F1 of x2. Yes, correct. The same thing, बस equal divided side हट जाएगा. नहीं Okay, होगा सर. f of x1 is strictly greater than f of x2. Okay, great. Fine. समझ में आया सबको? Everyone clear? Yes sir. Okay, fine. Now, अब पता कैसे चलेगा कि एक फंक्शन वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास ग्राफ था. यहाँ पर हमारे पास ग्राफ था, इसलिए हमने इजीली बता दिया. लेकिन अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, कोई ग्राफ गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे? चलिए उसको देखते हैं. ओके ओके, सो कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव? जनरल फॉर्मूला क्या था? f dash is equal to limit s tends to 0. Next, what is the formula? बताओ, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? लिमिट s tends to 0, f of x plus h minus f of x डिवाइडेड बाय h. ये था हमारे पास फॉर्मूला डेरिवेटिव का. यस, ओके फाइन. Yes. सो अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है ऐसा, ये हमारा x है और ये हमारा x प्लस h है, एट दिस पॉइंट लेट्स सपोज दिस इज माय f of x एंड दिस पॉइंट f of x प्लस h हमारा फंक्शन का वैल्यू होगा. ओके, नाउ फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हमारा जो f of x प्लस h का वैल्यू that will be higher than f of x. Yes, yes. So यहाँ पर मेरे को बताओ कि f dash का वैल्यू कितना होगा? Will be how much? Is it positive or negative or equals to 0? बताओ, is it positive, negative or equals to 0? Positive. पॉजिटिव आएगा. क्यों? कि यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास x प्लस एस का इसका वैल्यू ज्यादा है, दिस इज मोर एंड दिस इज लेस. ओके, दिस इज मोर, दिस इज लेस. अगर मेरे बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो हमारे ऊपर आएगा क्या? ना पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय एस. तो एक पॉजिटिव नंबर ऑलरेडी है, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, सो आई गेट पॉजिटिव नंबर. ओके, सो बेसिकली f of dash will be positive number. Okay,
that means f dash is greater than 0. ओके, सो ये हमारा कंडीशन आ गया कि अगर हमारे पास एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमारा डेरिवेटिव क्या होगा ना, इट विल बी ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर? पॉजिटिव होगा सर। यस सर। यस, ओके। सिमिलरली अगर मैं लेता हूं फॉर ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, देन क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। then it will be equals to 0 because f of x plus h, it can be greater or equals to f of x. That implies f dash will be equals to, okay, greater than or equals to 0. Okay, this is the condition for increasing functions. Okay, this is the condition for increasing functions. Similarly for decreasing functions, first strictly decreasing function क्या होगा, f dash will be, Negative. लेस देन 0। okay, 1 second. Yes, it will be less than 0. Okay, similarly for simple decreasing function क्या होगा हमारे पास, it will be f dash of will be Less than equal to 0. less than equals to 0. Good. Okay, तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज इंक्रीजिंग व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन और इसको कैसे निकालते हैं। ओके, बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन होगा 0, देन गुड, दैट इज इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। ओके फाइन, सो एक और चीज में पढ़ना है, दैट इज मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, monotonic function. Okay, what is monotonic function? What is monotonic function? अगर मेरे पास एक फंक्शन है, वो एक इंटरवल में कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो इन दैट केस आई से दिस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। इन दैट केस आई से दैट इज मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, अगर मेरे पास एक इंटरवल है लाइक दिस, ओके, सो इंटरवल में ए से इंक्रीज कर रहा है, ओके, या फिर ऐसे है, लेट्स सपोज, एंड इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग लाइक दिस। ओके, सो मतलब यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर इन दोनों फंक्शन को मैं बोलूंगा कि मोनोटोनिक फंक्शंस। ओके, सो व्हेन अ फंक्शन either increases or decreases in an interval, it is called as monotonic function. ओके, अगर पूरा पूरा कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है या फिर पूरा पूरा कंप्लीटली डिक्रीज कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, नाउ मेरे को बताओ कि अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, सो व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक, कैसा फंक्शन है? यस, बताओ, ये जो मेरा फंक्शन है वो कैसा होगा, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है ना। यस, Both राहुल। increasing, decreasing. बोथ और इंक्रीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ, yes, but in this case we will say that it is neither increasing nor decreasing. Why? Because it is neither, okay, can I say that in this interval, in this interval, okay, it is increasing, but in the next interval it is decreasing. So overall I cannot say that it is increasing or decreasing. मैं पूरा पूरा पर्सन नहीं बोल सकता ना, तो आई से दैट दिस इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आई बात? it may be seem like later, okay, what Ravish sir is saying, but this is actually correct. In mathematical language, it say that this is neither increasing nor decreasing. Okay, क्योंकि हम
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक पर्टिकुलर इंटरवल में बोलते हैं. अगर ये पूरा पूरा इंटरवल हो गया, so इस पूरे इंटरवल में इट इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बट इन दिस स्मॉल इंटरवल, okay, in this small interval this is increasing, and this small interval it is decreasing. Okay, so अगर ये mixed है, so I'll say this is neither increasing nor decreasing. Okay, clear? Yes, sir. Okay, fine. So now I'll see how to identify in which interval a function is increasing or decreasing. Okay, ये थोड़ा सा important concept हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. Okay, 1 minute. Yes. कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा कि I'll be having a simple function y is equals to f of x like this. ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको, ये जो फंक्शन है, I'll find the derivative, find derivative. ओके, उसके बाद क्या करेंगे ना, जो f of dash मिलेगा हमको, we'll find that f of dash of x. Okay, now equate this equation to 0. This first, second, equate. Okay, f of x का डैश कितना है का 0 के बराबर हम रखेंगे. ओके, आफ्टर डूइंग दिस विल फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. ओके, फाइंड वैल्यूज for x. Okay, and the values you get, let's suppose a, b, c. Okay, so these are called critical points. critical points. तो यहाँ पर अलग. ओके, सो यहाँ पर जब मैं थ्योरी बता रहा हूँ थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, यू माइट नॉट रिलेट, बट हम क्वेश्चन करेंगे तो we have a basic understanding how we are doing. Okay, so this is just a working rule I'm saying. Okay, हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो विल बी हैविंग सम वैल्यूज फॉर x लाइक a b c और सब कुछ. ओके, सो करने के बाद मतलब a हमारा, b जो हमारा, c जो हमारा, दिस विल बी द, यस यस, सो दिस विल बी माय फैक्टर्स. ओके, मतलब रूट्स होंगे मेरे इक्वेशन के. दैट मींस द फैक्टर्स विल बी, factors are a minus x or x minus a, फिर I'll take a number line at point 1 2 3 और a b c. ओके, तो यहाँ पर मैं मेरे जो नंबर्स मिले हमको, क्रिटिकल पॉइंट्स, आई प्लॉट दैट ऑन द नंबर लाइन ए बी सी करके. ठीक है, नाउ ये जो हमारे पास इंटरवल है, इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो और लेके ये जो मेरा डेरिवेटिव है इसमें डाल दो. डालने के बाद अगर डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, सो इन दैट केस द इंटरवल में वह फंक्शन का वैल्यू इंक्रीजिंग होगा. अगर इसमें नेगेटिव आ गया कहीं पर, तो वहां पर फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है. और कहीं पर पॉजिटिव आ गया मतलब इंक्रीज कर रहा है, फिर से डिक्रीज कर रहा है. ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी हैपनिंग. ओके, दैट मींस, okay, we'll do a question, we'll get idea. Okay, let's suppose question is f of x is given as x square minus 2x. Okay, so find where it is increasing and decreasing. Okay, find it out कि मेरे पास एक फंक्शन है, ये कहां पर इंक्रीज कर रहा है, कहां पर डिक्रीज कर रहा है. ओके, so basic steps. First, you have to take the derivative f of dash of x. Okay, so that means f dash of x कितना आएगा, 2x minus 2. 2x minus 2. Okay, so next step is equate it to 0.
जो हमें मिला वैल्यू उसको 0 के बराबर कर दो. Okay, that means f dash of x is equals to 0. That means 2x minus 2 is equals to 0. That implies x कितना आएगा? 1. x कितना आएगा? x will be equals to 1. Okay, so ये जो 1 निकल के आया x का वैल्यू, this is my critical point. Okay, my critical point. Okay, so next point, what is that? The factors will be x minus a, x minus b, x minus c. Okay, so the same thing यहाँ पर मैं अगर लेता हूँ इसको, f dash of x कितना आएगा? 2 whole into x minus 1. Okay, same thing here. 2 whole into x minus 1. Okay, so now I'll plot it on the number line. So मेरे पास एक ही पॉइंट है, that is 1. Okay, this is minus infinity, this is plus infinity. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम अब, ये जो मेरा दो इंटरवल है, जिसमें फर्स्ट इंटरवल, जिसमें सेकंड इंटरवल, तो इंटरवल में 1 में से मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट को पिक करूंगा और लेके एफ ऑफ डैश में पुट कर दूंगा. ओके, लेट्स सपोज एनी पॉइंट 0. ओके, यहाँ पर हमारा 0 भी होगा, यहाँ पे 0 होगा. ओके, सो एफ डैश ऑफ 0 कितना आएगा? एफ डैश ऑफ 0 आएगा -2. -2. ओके, सो -2 आएगा, बिकॉज 2 into 0 minus 2, that is -2 आएगा. सो यहाँ पर दैट मीन्स f dash of 0 का वैल्यू कितना है? दैट इज लेस देन 0. दैट मीन्स at this interval my function is decreasing. Okay, okay, so in the interval infinity to clear one, clear. Okay, Yes, fine. sir. So similarly एक ऐसा पॉइंट लो in this interval, the second interval, कोई भी एक पॉइंट ले लो और इसको पुट करो f dash of x में, कितना आएगा? f dash of कितना ले, 2 ले लेते हैं. ओके, लेट्स सपोज 2 कितना आएगा? 2 into 2 minus 2, that is 2. 2. That means I have f dash of 2, yes, is greater than 0. That means this function is increasing. So in the interval minus infinity, okay, 2 comma or 1 comma, okay, here, okay, wait, here small mistake is there, this is 1. Okay, because from this point, okay, similarly 1 to infinity पे कितना आएगा? It is, the function is Increasing. increasing. Okay, clear everyone? Clear? Now coming to back the steps, यहाँ पर हम क्या करेंगे? Draw the number line. Draw number line. क्या आएगा? Put values and check for f dash of x. अगर f dash of x मेरा पॉजिटिव है तो कितना? f dash of x is greater than 0, that means increasing. And if f dash of x is less than 0, that means decreasing. Okay, clear? Clear everyone? Okay, so यहाँ पर अब अगर आप सब क्लियर हो तो I'll put an question to you all you. Okay, तो यहाँ पर कौन से इंटरवल में मेरा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है? In which interval the function is strictly increasing? सेम फंक्शन, ओके, फंक्शन मेरा सेम है. और 1 to infinity, तो ये सेम हो गया ना, यहाँ पर सेम हो गया ना, यहाँ पर 1 to infinity. Yes, Abhipsa, correct.
यस करेक्ट ओके। सो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है कि अगर अगर लेट्स सपोज फॉर इंक्रीजिंग वी क्लोज ब्रैकेट्स, यूज क्लोज ब्रैकेट्स like this. Okay, अगर वो बोला कि strictly increasing, strictly strictly increasing, then we'll say that use open brackets like this. Okay, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, this will be in ऐसा 1, infinity. तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. अगर डिक्रीजिंग बोला तो यूज क्लोज्ड. अगर इंक्रीजिंग बोला तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो क्या आएगा ना, यूज ओपन. ओके, क्लियर एवरीवन. कहां पर ओपन ब्रैकेट और कहां पर क्लोज ब्रैकेट यूज करना है. और एक पॉइंट था हमारे पास कि अगर कहीं पर इंक्रीज होता है तो इन दैट साइड वी हैव टू ऑलवेज यूज द ओपन ब्रैकेट. ओके, कहीं भी हम क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे. क्लियर. If you have any doubt, you can ask me now because this is important and we'll use this concept further also. मैक्सिमम मिनिमा और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए. ओके ओके. सो if f of x is equals to x to the power 4 minus 8x cube plus 22 x square minus 24x plus 27. ओके, तो यहाँ पर फाइंड करो कौन से इंटरवल में वो इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है. ओके, फाइंड intervals where it strictly increasing, b is increasing, c is decreasing or strictly decreasing, decreasing. कौन से इंटरवल पर ये इंक्रीज हो रहा है, कहाँ का डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज, वो हमें फाइंड करना है. ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पर सर वो लास्ट बताओ. वाला क्या है? डिक्रीजिंग. नहीं सर, वो 24 प्लस 24x प्लस डिक्रीजिंग. 15 में सर. ओके, प्लस 27. 27. 27. I'll write it again, no issues. अगर दिखा जाएगा x to the power 4 minus 8x cube plus 22x square plus 27. Okay. Yes. What shall I do? What is the first step? You done it. Yes. पहले डेरिवेटिव निकालेंगे. ओके, f dash of x कितना आएगा. बताओ, f dash 4x of x क्यूब कितना आएगा. 4x 4x cube minus 24x square plus 44x minus 24 is equal to 0. माइनस 24 इज इक्वल टू 0. ओके, सो इसको फिर से इक्वेटिंग टू 0. ओके. सो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक चीज हमें करना है, जब भी हम यहाँ पर जीरो निकालने के से पहले
we'll try to maximize or maximum number of factors we want. Okay, यहाँ पर जितने factors कर देंगे उतना ही हमारे लिए easy है. Okay, so let us first factorize this one. Okay, कितने factors हम निकाल सकते हैं. Okay, so उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, अगर मेरा फंक्शन का वैल्यू कहीं पर भी जीरो आ रहा है, that will be an factor. That means I'll put x is equal to 1, 2, 3, 4, etc. and check where the value is of f dash of x is equals to 0. Okay, जो जहां पर भी हो गया, that is my critical point. The point will be called as critical point. Okay, clear? Now यहाँ पर put करो f dash of 1 कितना आ रहा है, f dash of 2 कितना आ रहा है, f dash of 3 कितना आ रहा है, 4 कितना आ रहा है, 5 कितना आ रहा है. तो जिस पॉइंट पर भी हमारा f dash of x का वैल्यू 0 आ जाएगा, that will be my critical points. Okay, तो main aim is to find the first critical points. तो critical points कौन से हैं? Okay, first put करो f dash of 1 कितना आ रहा है, f dash of 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. Okay, f dash of 2, जस्ट यहाँ पर x के वैल्यू 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर, और यहाँ पर तो नहीं. ओके, तो रखो कितना आ रहा है, पुट करो, बताओ f dash of 2 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. ओके, सो f dash of 3, 0. 0 आ रहा है. ओके, गुड. ओके, f dash of 4 should I find, क्या मुझे f dash of 4 निकालना है? No, sir. नो, बिकॉज अगर मेरा फंक्शन ही लाइक द पॉलिनोमियल हमारा है वो थर्ड डिग्री का है, तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरा डिग्री 3 है तो उससे ज्यादा पॉसिबल रूट्स हमारे पास नहीं होंगे. तो मैक्स टू मैक्स हमारे पास 3 ही रूट हो गए जो कि हमें मिल गए हैं यहाँ पर. सो 1, 2 and 3 are my critical points. Okay, this is my critical points. Clear है? Clear everyone? Okay, Yes, sir. so f dash of x हमारा कितना था? Yes. Okay, 4x cube minus 24x square plus 44 of x minus 24. Okay, now so 4 I'll take okay, I'll take 4 common, कितना आएगा, x cube plus minus 24 कितना हो जाएगा, 8 और 6 x square plus 11x minus 6. ओके, तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने कितने थे ना, 1, 2 and 3. So write x minus 1, x minus 2 and x minus 3. So these are my critical points now, and I have found the factorials for the function f dash of x. Okay, clear? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, गुड. सो हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हैं 1, 2 and 3. ओके, सो we'll draw the number line. So 1 is 1, 2 is 1 and 3 is 1. So यहाँ पर क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू, अब क्या करेंगे, बताओ कोई. वैल्यू का वैल्यू इंटरवल में निकालेंगे. हाँ, हर एक इंटरवल से हम एक एक पॉइंट लेंगे और एफ डैश एक्स में हम पुट करेंगे. ओके, सो यहाँ पर इजीली लेते हैं हम 0 यहाँ पर. ओके, ठीक है, एफ डैश ऑफ 0 कितना आएगा,
बताओ, मतलब फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस देखो कि साइन साइन में क्या हो रहा है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, नेगेटिव सर. नेगेटिव आएगा क्यों? बिकॉज 4 इज पॉजिटिव हो गया इनटू x-1 मतलब 0-1, 0-1 मतलब नेगेटिव आ गया. फिर से x-2 अगेन नेगेटिव, अगेन नेगेटिव. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 3 नेगेटिव वैल्यूज है, मतलब कि यहाँ ये दोनों मिलकर हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर से एक और नेगेटिव आएगा, दैट इज दिस इज नेगेटिव. सो फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज होगा सर. डिक्रीज. ओके, डिक्रीजिंग. ओके, सिमिलरली अगर लेते हैं हम एफ डैश ऑफ, कितना आएगा यहाँ पर लेट्स सपोज 1.5, 1.5 कितना आएगा? पॉजिटिव. 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 ये वाला कितना आएगा? दिस इज माई पॉजिटिव, दिस इज माई नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव. तो दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गए, और हमारे पास बाकी सब तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, so it will also be positive. That means it is increasing or decreasing? इंक्रीजिंग. इंक्रीज. Increasing. Okay. Okay, good. Similarly for this interval, let's suppose कितना आएगा यहाँ पर? f dash of नेगेटिव. 2.5, let's suppose नेगेटिव आएगा. गुड, यहाँ पर नेगेटिव. नेगेटिव आएगा, सो यहाँ पर भी डिक्रीजिंग. ओके, सिमिलरली फॉर द f dash of 3.5 कितना आएगा इन द नेक्स्ट इंटरवल? पॉजिटिव. पॉजिटिव. कितना है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. गुड. ओके, सो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग. ओके, फाइन. अब मेरे को बताओ कि कौन से इंटरवल पर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है. ओके, राइट. ओके, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर हो रहा है? कौन से इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है? 1,2 ओपन वन ब्रैकेट. यूनियन 1,2 ऑफ विच ब्रैकेट? हाँ, कौन से ब्रैकेट पर? ओपन. ओपन. ओपन ब्रैकेट. ओके, यस. एंड यहाँ पर ऑल्सो यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी पर. यस, यू कैन राइट और कॉमा यू कैन राइट. ओके, इन दोनों इंटरवल पर हमारा हो रहा है इंक्रीजिंग. यहाँ पर हो रहा है इंक्रीजिंग 1,2 1,2 like this. यूनियन 3, ऐसे. Uh, यस, क्लोज में आएंगे. yes ओके, sir. यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी. करेक्ट. इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट. इंफिनिटी यस, ओपन इंफिनिटी में होगा. ओपन ब्रैकेट आएगा. इंफिनिटी पर ओपन ब्रैकेट आएगा. ओके, गुड. सिमिलर डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग पर कहां पर आएगा? माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 क्लोज, माइनस इंफिनिटी ओपन, एंड 2 to 3 ओके, both closed. बोथ क्लोज. ओके, सिमिलरली अगर हम देखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर, एवरीथिंग इज ओपन. माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन, यूनियन 2 to 3 ऑल्सो ओपन. ओके, क्लियर यहाँ पर? रेडी? Yes sir. ओके. ओके,